चौधरी मैडम। हाँ यस मैम। हाँ मैम करिए। हाँ हाँ करना है। हाँ मंजू मैम आ रही थे। हाँ मंजू मैम से बात होगी, अब स्टार्ट करेंगे। Yes, I am there, Aparna ma'am. I'm ready. Good morning. Good morning, dear all participants from various colleges and my dear students. I welcome you one and all on the 7th day of certificate course on application of online e-resources on the topic open access resources for students. I welcome a resource person, Dr. Manju Dubey. She is masters in 3 subjects, namely chemistry, library science, and English literature. She is presently working with R.S. Mondle Dharampet Arts and Commerce College, Nagpur, as a librarian. She is also visiting faculty to Department of Library and Information Science. She is having 10 years of experience of librarianship, teaching and research. She has completed her doctorate on the topic Digital Copyright in India, a study. To her credit are more than 41 research papers in international Scopus Index journals and conferences. She has worked as IQAC coordinator for 5 years at her college. Presently, she is also the research center coordinator and RUSA coordinator of her college. She is actively involved in extension and community development practice of the college. And she is also the Unnat Bharat Abhiyan coordinator of her college. She has been invited as an expert speaker in various colleges and institutions for varied topics like copyright and digital copyright, plagiarism, publication ethics, re-engineering of libraries, National Digital Libraries of India, and role of libraries in NAC accreditation, etc. I welcome you, madam. Thank you so much, ma'am. Thank you. Aparna ma'am, Yes. should I start with my presentation? Oh, yes, ma'am. And what about my am I audible? Yes, you are audible. Okay, ma'am. So first of all, at the outset, I would like to thank the organizers of this certificate course. And ma'am, actually, I'm suffering from cough and cold, and hence I'm keeping my video mute. So will it do, or should I have to keep it on? Keep it on, ma'am. No problem. No issue. Actually, I have a problem with running nose and all. That's why. Okay. I just wanted to keep it mute. Anyways, Okay. I will just try to make it in between on and off. Okay. Thank you. Okay. So the thing is that this certificate course is, dear friends, is the need of hour. And I can see in the audience so many learned librarians and even the faculties who are present, and they are very much well versed with this topic of open educational resources. So I take it as an opportunity to put my point of view about the educational resources which are openly available in the digital platform to all the individuals, especially for the students. Actually, ma'am, Aparna ma'am, there was a little bit of confusion. Earlier, we talked about research tools, and then we narrow it down to open educational resources. So in my presentation, I have included both. I have included the research tools as well as I have included the open educational resources for the students. Okay, so, with your permission, I am going to share my screen. Yes. Please confirm that my screen is visible to you. Is it visible, ma'am? Yes, ma'am, visible.
Okay, I'm putting it in the presentation mode. Yeah. A very good morning to this virtual August gathering, dear friends. And it's a privilege for me to talk to you about all the open educational resources and the research tools which are available for the students, for the researcher, for the faculties. Myself, Dr. Manju Dubey, and I am from R.S. Mundle Dharampet Arts and Commerce College. Now, before we talk about, we have nowadays, we are in the digital platform of the complete education system has switched over to the digital platform. Out of compulsion, we can say, or it is the need of the hour. Now we are into the open digital platform or the digital ecosystem of the education. And hence, we should know about the open educational tools or the research tools which are freely available to all of us, so that we can make maximum use of these tools for our studies, for our research, and for our academic excellence. And hence, it is now that this particular certificate course is it is in this direction only, and I am really feeling privileged to talk on this platform and to discuss about these tools which are readily available to all of us. Ma'am, if I should continue with English, or it should be a mix of English and Hindi? Mix, ma'am, English and Hindi, because students. Okay, yeah, I can understand that. That's why I inquired. Okay, ma'am, thank you. Oh. So now, first of all, this question should come. ये question हमारे मन में आना ही चाहिए कि actual में open educational resources के बारे में हम बोलते हैं तो ये क्या है और इसका actual में origin कब हुआ. So आप देखेंगे कि यूनेस्को ने अपने मैंडेट में 2002 में ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट सब लोगों के सामने लाया. Open educational resources are the resources which are of completely academic pursuit. मतलब जिनका इस्तेमाल completely educational और academic purpose के लिए किया जाएगा और उसमें बहुत सारे चीजें होंगी. जैसे it will contain the courseware, जैसे कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन के कोर्सेज से रिलेटेड मटेरियल उसमें इंक्लूड होगा. कुछ उसमें इंक्लूड होगा जैसे कि इट शुड कंटेन द ओपनली अवेलेबल जर्नल्स, ओपन बुक्स, ओपन ई बुक्स. All these things will be available for all. So now we will try to see why, how, and what of all the open educational resources through this session, dear friends. Now, आप हम सब के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो इंटरनेट पे इतना खजाना अवेलेबल है, बट मुझे तो लगता है कि when we talk about इंटरनेट, we think that we are in the poverty in plenty. हम लोग के पास हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या सोर्सेस यूज करने हैं. है तो मिलियंस ऑफ सोर्सेस अवेलेबल, लेकिन कौन से सोर्स यूज करने हैं. सो इन दिस सेशन वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल दो सोर्सेस व्हिच आर रेडीली अवेलेबल टू अस एंड वी कैन मेक यूज ऑफ इट. जैसे एक in this slide I have just tried to show you that there is one student and he is having so many questions in his mind. He is just trying, he is in a dilemma. वो एक कश्मकश में है कि मेरे पास तो इतने सारे इंटरनेट पे टूल है, तो मैंने कौन से टूल्स यूज करने चाहिए. मेरे पास इतने सारे ई रिसोर्सेस अवेलेबल है, मुझे लिटरेचर सर्च जब करना है या मुझे कोई रिसर्च करना है तो मुझे कौन से चीजें को यूज करना चाहिए. सो इन दिस सेशन वी विल ट्राई टू पुट आंसर, गिव यू आंसर टू योर क्वेश्चंस, डियर फ्रेंड्स. Now, objective of this webinar, this certificate course is exclusively to help the students to reduce their searching time. वो उनको पिन पॉइंटेड सोर्सेस बताने हैं कि कौन से सोर्सेस उन्हें यूज करने हैं, उन्हें किस तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर. कोई भी चीज हम जब करते हैं वी हैव टू रिव्यू द लिटरेचर. बेसिकली इट वाज अबाउट रिसर्च. सो यू इन रिसर्च लिटरेचर रिव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. So it's like we should know ki what are the types of literature available and which we should use. We should also know कि हम जो information है उसको कैसे convert करेंगे हमारे एक written document में.
किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, और फाइनली हम हमारे रिसर्च को कैसे प्रमोट करेंगे। तो ये सारे ओपन एजुकेशनल टूल्स हम देखेंगे हमारे प्रेजेंटेशन में, with through which we will be able to know that what we can use, right? So now I'm not able to, yes, so the outline in this particular presentation, I am going to explore, tell you about the various research tools which are freely available and which can be used by all the researcher. We can also try to analyze the various tools which can be used at the different stages of research. कौन से हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो कौन से स्टेजेस में हम उसको यूज करेंगे. वी विल ऑल्सो नो ए लिटिल बिट अबाउट हम कैसे स्टार्ट करेंगे हमारे सर्चिंग को. So we will try to develop a searching strategy, how to find the proper keyword. Because dear friends, when we talk about keywords, the keywords of the key phrase, they played the absolutely important role. They play a very important role when we talk about how to start our research. Similarly, हम कैसे properly हमारे required content को find करना है. All these things we are going to explore in this particular session of mine. Now, how do research gain momentum? Dear friends, first of all, we will be discussing about, basically I am focusing first on the research tools, and then we will be going to certain open educational resources. So the question arises that how the research gain momentum. कैसे रिसर्च की शुरुआत होती है, कैसे उसमें स्पीड आती है. So हम अगर देखें तो there are particularly the first two step in research activity are, हम कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं. वी आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम, वी ट्राई टू सिचुएट द रिसर्च फॉर द इवैल्यूएशन. हम ट्राई करते हैं कि सबसे पहले कि दुनिया में क्या चल रहा है. सो वी ट्राई टू एक्सप्लोर दोस थिंग्स, and then once the problem is identified, then we go for the review of that particular topic in depth. हम फिर अपना रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन करते हैं. तो इसका मतलब है कि रिसर्च स्टार्ट विद एन आइडिया. We should have an idea, and once that idea is given a proper shape, it is converted into a proper question, then we get involved and our research get momentum. हमारी research speed up होती है. So it's like the research tools बहुत सारे available हैं और हमें हर research cycle बोलेंगे. अगर पहले एक idea आएगी, then it will take the form of a problem or the research questions, and so on and so forth. Then there will be review of literature, and then we are going to pen it down into paper. Then we are going to use different resources. Then from the resources, we are going to give it a proper form of a research publication, and finally we are going to publish that. So in this way, the research tools are available, and at every point of research cycle, हमें देखने को मिलेगा कि we have research tools available with us. So if it is available, then आप research tools को किस तरीके से define करेंगे. अगर मैं बोलती हूँ एक general layman के language में, तो research tool क्या है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि open educational resources क्या है. इसमें courseware है, इसमें open e-books है, open journals है, उसमें different types of online tutorials हैं. So ये सारी चीजें, even multimedia. So all these things का combination will be open educational resources, but जिनका main purpose है education को serve करना. Same उसी तरीके से अगर हम research tool को define करेंगे तो what are research tools? They are the vehicle that broadly facilitate research and related activity. This means research tools हमें सशक्त बनाते हैं कि हम data को collect करें, उसको properly organize करें, उसको analyze करें, उसको visualize करें और finally उसको publicize करें, मतलब लोगों तक उसको पहुंचाएं. तो ये सारे research tools जब हम जानेंगे कि जो freely available हैं, so we will be able to consolidate our research in a perfect way. So अगर हम research tool की बात करें तो अगर broadly हम classify करें, so there will be 4 nodes in which research can be divided. It will be the searching of the literature. सबसे पहले हम लोग बहुत सारा literature पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि ये topic पे बहुत कम काम हुआ है या ये topic पे already काम हो चुका है. So in this way, the first node will be searching the literature. The second will be writing of that research
into a particular aspect in a proper way, and then we have to put it into some journals, and finally हमें हमारे रिसर्च को विजिबिलिटी बढ़ाना है, हमें उसको लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोगों को पता चले कि हमने ये काम किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. जब तक वो नहीं होगा, we will miss. If we are missing any of these notes, we are not doing a perfect research. So अगर रिसर्च टूल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज या जार्गन्स जानना जरूरी है, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स जानना जरूरी है. कौन कौन से टर्म्स हमें जानना जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ई रिसोर्सेज. सो व्हाट आर ई रिसोर्सेज? Any data or information which is in digital form will be called as e-resources. मैं इसको एकदम सिंपल फॉर्म में मैंने डिफाइन किया है कि अगर आप e-resources बोल रहे हो, so it will be data or information in the digital form. Then we should also know about online discovery tools. Now, एक simple discovery tool अगर मैं आपको बोलूं तो Google is a discovery tool. It is a search engine. So all the search engine are the discovery tools, right? Madam, there is a background noise. It is disturbing me. Okay, thank you. So next is the online discovery tools. So we should know about the search engine or the multiple search engine. एक हम लोग जनरली गूगल पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्या, लेकिन और कोई ऑप्शंस हैं जिनसे हम हमारे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं. जैसे कि आगे जाके वी विल सी देयर इज वन सर्च इंजन which is purely for the academic purpose. So Google is for all the general purpose, but when we go for these discovery tools, we will know. So even the databases, they will be clubbed under the online discovery tools. So हमें e-resources पता होना, then online discovery tools. Also, there are search techniques. For example, search techniques भी हमें formulate करते आनी चाहिए कि हम किस तरीके से search को आगे ले जाएंगे. आप एक simple सा example अगर लें, Google में अगर आप properly keyword नहीं डालते हैं, तो आप वेवर्ड चले जाते हैं, आपके रिजल्ट्स नैरो डाउन नहीं होते. जबकि आप उसी को अगर एडवांस सर्च या कोई और ऑप्शन यूज करते हैं, सो वी शुड नो द सर्च टेक्निक, वी शुड नो हाउ टू यूज देम. Then there should be a proper search strategy, systematic searching plan should be there, and finally we should also know about open access, free access and open educational resources. So actually जब हम एक research की बात करेंगे, dear students and dear friends, then it is a combination of two approaches. It is the creative approach on one hand, in a calculated way, and on the other hand, it is also about the quality. We are doing a creative work in a calculated manner, knowing all the things which are at our rescue. तो हमें अगर वो चीजें पता रहेंगी, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, उनको कैसे यूज करना पता रहेगा, और हम उसको उसमें थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी इन्फ्यूज कर देंगे, सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ क्वालिटी रिसर्च. सो now I have just divided the research tool. I have just divided the research tool into all these things. Now mapping the landscape of research tool. अगर हम research tool को properly broadly divide करें, तो हम research tools को in category में divide कर सकते हैं. For tools which can be used for the review of literature, tools which can be used for the data collection, then tools which can be used for the data analysis and visualization, the tools which can be used for research writing. Because earlier I have explained that when we talk about research, it is like first you should do review, then you should write, then you should publish, and then you should publicize. So when these four things are there, then you should also know about the research writing tools, then the scholarly publishing tools, then you should also know about the research visibility tools. हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे कि हमारा research available है. If you are not getting the citation, that is exclusively because your research has not got that visibility. So we should also know about the tools, the visibility tools and the impact tools which are necessary, and we should also know about the research data management tools, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, कैसे प्रिजर्व करेंगे और कैसे शेयर करेंगे. So all these are forms part and parcel of the research tools.
In this way, if we are able to know about all these tools, definitely it is going to help us in a very good way to do the research. So the first thing which I need to talk to you is about the keyword search. Now, keyword or the phrase or the research term. Dear friends, I already told you that अगर हमारे कीवर्ड परफेक्ट नहीं रहे, हमने प्रॉपर फ्रेजेस यूज नहीं किए, रिसर्च टर्म यूज नहीं किए, तो हमारी कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक गायब हो जाती है और हमारा रिसर्च हमारा जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमारे रिसर्च को एक्सप्लोर करने के लिए, वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल पाता है. So the first search strategy should be we should define the topic in a proper keyword or the key phrases or the research term. So considering the scope of your topic, you should know कि ये research term मैं use कर रही हूँ, तो properly मुझे search results proper मिलेंगे. So what will be the tools that can be used for that? We need to compile certain keywords or we need to have develop a certain key strategy. So the first thing you should remember, हम कोई भी topic, I am not generally talking about research. Even in general, if we want to explore any topic, we should know that the topic should be very clear in our mind, and we should find the proper keyword or the key phrase because it forms the base of your research or your searching. So what are the tools then? What are the tools we can use? First is as I have discussed, majority of the people across the world, they around 66.30% of the researcher, they use Google. That is a survey done, and it told that around more than, I can say, not 3/4 but 2/3 of the population is using Google as a tool. But Google is and no doubt it is the best search engine and it is very user friendly as well. But by using Google, we should know the techniques to make the maximum benefit from the Google even. So the first thing we should hit or we should do is to try to do the searching in a very particular manner, so that three things we are going to make it. First is we should Google, you might be knowing that the Google में जो पेज की रैंकिंग होती है वो 3 क्राइटेरिया पे होती है. पॉपुलरिटी, मतलब कौन सी टॉपिक को सबसे ज्यादा हिट मिल रहा है या ट्रैफिक हो रहा है उस पे. सेकंड इज द क्वालिटी ऑफ लिंक. एवरी नाउ एंड देन अगर वो अपडेटेड है वो डॉक्यूमेंट जो गूगल में अवेलेबल है, तो इट इज going to get the highest search results. And third one, the metadata. अगर वो properly defined keywords हैं तो हम आराम से उसको सर्चिंग कर सकते हैं. So in this way, अगर हमें ये गूगल की ये जो पैरामीटर्स पता है जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे वो सर्च रिजल्ट को रिट्रीव करके हम सबके सामने लाता है, so first one is we should set the Google in a proper manner. हम हमारा गूगल सर्च इंजन को कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है. So that is very important. So how we can do that? We can do that by these bullet points which I have mentioned in this my particular slide. A researcher should be concerned of, we should select an appropriate search engine or a tool. We should put in the filtering options हमने put in करना चाहिए. We should have a well defined keyword होने चाहिए. We should also look for the type of the document and also look for the scholarly information. And finally, we should, हमारा main intention होना चाहिए कि we should search less, but we should get the relevant result. तो हमें एकदम pinpointed result मिले, इस तरीके का हमारा कोशिश होना चाहिए. So these are the tools, dear friends. These are for the keyword searching tools. If you want to go for searching these tools, तो आपकी टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक डिफाइन करना है आपको जब आपको रिसर्च करना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डू टॉपिक आइडेंटिफिकेशन, you are going to do feasibility testing using keywords और search term. फिर आप उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करते हो. आपने अभी आपके इस सर्टिफिकेट कोर्स में आपने देखा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जब यूज करते हैं, देयर आर सो मेनी फिल्टर्स अवेलेबल. सेम चीज आपको फिल्टर्स अवेलेबल है आपको एडवांस सर्चिंग में, तो आपको गूगल एडवांस सर्चिंग का यूज करना है. यू शुड ऑल्सो हैव द राइट कीवर्ड बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ द रिसर्च. एंड इफ यू आर पुटिंग द राइट कीवर्ड, mind well, you are going to be reflected more
in the search results. आपके भी जो research का आप कुछ publish कर रहे हो online, आपका research अगर keywords perfect है, so you are going to get maximum citation. So what are the tools we can use? On the right hand side of the slide, I have put in few tools, and these tools are Google Trends. Then there is a keyword generator. अगर हम इसमें कुछ words put in करें, so we will be able to retrieve the keyword. Then there are keyword sheeter, answer the public, keyword surfer, and all these keywords Google Search Console. So all these things are available, and we can easily go on searching and properly frame the keyword phrases for our research. So these are the tools which can be readily used for by everybody who are interested in doing the first part of the research, that is properly framing the keyword or the key phrases for your research. Next will be finding the proper article. अब हमने research की शुरुआत की. Research के लिए the primary source of information are the journal articles. So the next question will be हम कैसे proper articles को find करेंगे, कौन सी quality journals हम लेंगे और हम कैसे effective review of literature करेंगे. तो उसके लिए हमें tools चाहिए. So what are the tools which we can use? Always remember, dear friends, कि हमारा research लोगों तक जब पहुंचता है तो उसका impact होता है, और उसका impact 3 चीजों पे बहुत ज्यादा importantly रहता है. One is the quality of the journal. जर्नल की क्वालिटी क्या है, जर्नल क्वालिटी ऑफ द पब्लिकेशन, मतलब कि वो कितने बार लोगों ने उसको रेफर किया है और वो कहाँ पे कोट हुआ है, साइट हुआ है, एंड फाइनली द पर्सनल और द डिपार्टमेंटल मेजर, मतलब दैट इज आई थिंक बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस, बट दीज आर द थिंग्स वी So we have to do keep all these things in mind. So how to select the right journal? So हम कैसे journal को select करेंगे? क्योंकि हमें Hello, any problems, ma'am? Hello, participants, please mute your mic. Thank you, ma'am. So how to select the right journal? Now there are 2 approaches. पहले हम लोग देखते हैं कि अगर जर्नल हमें सिलेक्ट करना है तो इनिशियल अप्रेजल करना पड़ेगा. हम अप्रेजल करते हैं ना, सेल्स वो करते हैं किसी चीज को कि जज करते हैं. सो सेम चीज हमें ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना है कि ऑथर कौन है, वो कब पब्लिश हुआ, देन whether it is revised or not, who is the publisher, and the title of the journal. So this is the first part. When we are going to refer, we should not go for any substandard thing. We should always try to select the right journal. And secondly, we should also do the content analysis. So that is the secondary part. जब हम review करते हैं तो उसमें हम content analysis भी करते हैं. So it's like these are the 2 things. So this tool, which in this present slide, is the amazing tool, dear friends. Publish or perish. जब हम research की बात करते हैं, always remember research is more quality type of thing. And when we are going to do research, publish or perish, it is a multi-purpose tool. इस टूल ये फ्रीली डाउनलोडेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ओपन एक्सेस टूल है. अब इसमें ये टूल का क्या क्या यूज है? इससे आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कर सकते हैं. सारे क्वालिटी पब्लिकेशन एक प्लेटफॉर्म से आप रिव्यू कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द क्वालिटी जर्नल्स, क्वालिटी रिसर्च आर्टिकल्स, बिकॉज इट हेल्प टू आइडेंटिफाई कि कौन से आर्टिकल को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, किसको लोगों ने सबसे ज्यादा पढ़ा है और उसको साइट किया है. एंड यू कैन ऑल्सो नो अबाउट हु आर द एक्सपर्ट इन आवर फील्ड. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. देन through publish and perish, dear friends, you can also identify whether any research has been done in a particular area. आपको पता चल जाता है कि कोई उस particular area में कोई research हुआ है, और अगर research available है तो कौन से एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ताकि आजकल इतने सारे ग्रांट्स अवेलेबल है, लेकिन जो रिसर्चर है उनको ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ये पता नहीं चल पाता. सो this platform help you to identify the novel or the latest recent
topics on which the research can be done, and we can apply for different grants under that. So it is also help us in the development of a literature on a particular topic. हम जब किसी टॉपिक पे स्टडी करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसके बारे में क्या रिसर्च हो चुकी है वो एक्सप्लोर करते हैं. तो ये सारी चीजें you can do from this tool, Publish and Perish. It also help you to create references. You all are very much aware of the plagiarism tools. Plagiarism, all these, this is the burning topic. हम किसी का directly नहीं ले सकते हैं कंटेंट, हमें उसको साइट करना पड़ेगा, उसको रेफरेंस देना पड़ेगा. तो ये सारा जो साइटेशन, रिकॉर्ड्स और रेफरेंसिंग, पब्लिश एंड पेरिश, इस मल्टीपर्पज टूल से हम लोग यूज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर द बिब्लियोमेट्रिक रिसर्च, कौन सा ऑथर है, कितने जर्नल्स हैं. एंड फाइनली इस टूल से इट गिव्स यू एन आइडिया, it gives you an clarity to decide which journal to target. एक बार आपका रिसर्च हुआ, I request you all कि if that research should be published in a good publication, and if it need to be published, आप सबको एक proper journal को target करना है, and that can be only done if you use the proper tool. And Publish and Perish is one of the excellent tool. I have just tried to, I have downloaded this tool and I have taken a screenshot of that. If I put in Manju Dubey, I have 23 papers on that, and how much citation and उसकी visibility कितनी है वो मैं इस screenshot में आप देख सकते हैं. So I can see my H index and all these things. So this is possible. आपको अगर कोई टॉपिक को एक्सप्लोर करना है, मैंने इसमें नॉलेज मैनेजमेंट डाला, तो आई गॉट 40 क्वालिटी पेपर्स, और इस 40 क्वालिटी पेपर्स को कितने बार क्या साइट हुआ है, कौन सा पेपर अच्छी कौन सी जर्नल में छपा है, उसका पैटर्न टाइप क्या है, इज इट अ बुक, इज इट अ रिसर्च पेपर, वो सारा मुझे इस टूल से अवेलेबल हो जाता है रेडी. सो दिस इज ए वेरी एक्सीलेंट. अब और भी टूल्स हमें पता होने कि जिससे हमें पता चले कि ये जर्नल जो हम यूज कर रहे हैं या जो हमें रिसर्च आर्टिकल यूज कर रहे हैं क्वालिटी पब्लिकेशन है. सो व्हाट आर द टूल्स? एक जनरल रेपुटेशन जो हमारे दिमाग में रहती है कि एक पर्टिकुलर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन या सोसाइटी से पब्लिश होने वाली जर्नल को हम क्वालिटी जर्नल मानते हैं. तो ये एक नेचुरल सी बात है कि APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की कोई जर्नल है, या IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की जर्नल है, सो इट्स लाइक अ क्वालिटी जर्नल. So they are highly regarded. I've just given you an example. So what will be the tool? So for the researchers, Thomson Reuters, which was earlier called ISI, not IS, it is Indian International Scientific Information. So it's Thomson and Reuters database. इसमें जो journals आपके पास available है, इसमें citation data available है 50 साल तक के, 50 साल पहले के जितने journals हैं उनका. आप सिंपली इस टूल को अगर रेफर करें तो आप एक क्वालिटी पब्लिकेशंस को यूज कर सकते हैं कि आपको पता चलेगा. इवन आप लोग को पता है कि आजकल जब कैस का हम फॉर्म भरते हैं, इवन फैकल्टीज, सो वी हैव टू यूज दिस थॉमसन रूटर्स इंडिकेटर टूल, बिकॉज इसमें जो इंडेक्स जर्नल है दे आर ओनली कंसिडर्ड द वन व्हिच आर क्वालिटी जर्नल्स. सो this is an important tool. You should refer this index Thomson Reuters tool, and it is covering all. It is इसमें कौन से है, साइंस वाले भी हैं, सोशल साइंस वाले भी जर्नल्स हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एज वेल एज वेब ऑफ नॉलेज के सारे जो रिसोर्स एंड जर्नल्स हैं, जो प्राइमरी पब्लिकेशंस हैं, they are included. Not सारे, only the quality one. So this tool will be the excellent tool to judge the quality of the journal. So as I said, it was earlier called Thomson Reuters was earlier called Institute for Scientific Information, and it was publishing the annual journal citation report, which has a great impact factor for amongst the in the scientific community. तो हम इससे decide कर सकते हैं कि हमें कहाँ पब्लिश करना है, या फिर हमें हमारे रिसर्च के लिए कौन से जर्नल्स का यूज करना है. ओके, नाउ अनदर टूल, देयर इज अ अलर्ट सिस्टम इन Google also. There is an alert system, so you can activate that alert system. That is also a tool which help
you to indexing the desktop search tool. So it's simple that you can, what you can do, you just have to activate that alert, Google alert system. You just have to enter your topic. आपका सर्च टर्म क्या रहेंगे उसमें एंटर कर देना है, और आपको टाइप और कितना आपको कौन से पैटर्न में चाहिए और फ्रीक्वेंटली चाहिए. Suppose I am interested more in copyright. So that is my topic of interest. मैं Google alert पे डाल दूंगी कि I have to just need that. मैंने email के थ्रू अपने मुझे अलर्ट, Google alert मुझे सर्विस से मुझे हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे. So this alert system can also be an excellent up to date. It will keep us up to a field of interest. So there are several alert tools available. जैसे कि अगर अलग-अलग Springer, Science Direct, ये सारे quality publishers हैं. क्योंकि जब हम research की बात करते हैं, हम quality को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. So when we talk about all these quality publishers, इनके सबके alert system है. Suppose I am interested in very particular topic which are published by these publishers, I should activate my alert system, and through that I will be getting that alert that few publications which are of my topic of interest are published. So this is one tool which can be used by the researcher. We can also go for conference alert tools. So through that also हमें different जो latest हमारी field में conferences हो रहे हैं. I have taken only 2. There are n number of. So you will be getting an alerts, so that if I want to publish the paper in my topic of interest, or I want to participate in a particular conference, I can get that alerts instantly based on my research area. Now, this is about how to select the journal. Now, once I've selected the journal, I have reviewed few topics and researches. Then the next thing is I should know I should know how to paraphrase, how to edit the tool, or how to avoid plagiarism. So this should be known, and hence the paraphrasing tool, editing tool, and the how to avoid the plagiarism. These tools should basically concentrate on putting the original work. And when we are going to put the original work, where you all these like paraphrasing, plagiarism tool. So these are the few tools which I have listed. These are freely available, and they can be these tools. They are some combination of all these. So White Smoke Writer, then Ginger Proofreader, Microsoft Word is also can be used, Google Docs, Office Live. So here we do editing, we do few like the GoParaphrase.com, DupliChecker for the plagiarism checking, Quillboard.com, ParaphraseOnline.com. So all these tools are the tools which will help your research to be plagiarism free, or which will help you to. So all these tools are available at your disposal, and you can make use of these tools for paraphrasing, editing, and avoiding plagiarism in your research writing. Now, I have just taken these two things that हम plagiarism avoid करना बहुत ज़रूरी है, because when we talk about research, so we should also know about the plagiarism, because we should take it has been found that maximum time ये जो plagiarism होती है accidentally हो जाती है, मतलब हमें नहीं पता चलता है, but it is done. So to avoid that, we should follow these steps. We should only hand in our original work. We should write it accurately. We should indicate from where we have downloaded the information. We should never use someone else's work. We should never copy
we should do not translate without crediting the source. हम लोग कई बार translated work करते हैं, so we should credit the source. We should also paraphrase someone else's work, but we should give the we should not means we have to modify, but we should give the proper credit. We should also not make a mosaic work and एक थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से लिख के combination, that should not be done. And finally, the ghost writing sort of work. If somebody is doing the work, he or she should be given the proper credit for that. Otherwise, it's like it's again coming under the purview of plagiarism. Also, the top reason, अगर ये डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा कर रहे हो, मतलब सेम टू सेम अगर डुप्लीकेशन, स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे कि यूजीसी ने गाइडलाइंस दी है प्लाजरिज्म के बारे में, और ये प्लाजरिज्म की गाइडलाइंस हमें बताती है कि स्टूडेंट्स को भी आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंटली उनको ध्यान रखना है कि ये जो दे शुड कीप देमसेल्फ सेफ फ्रॉम द प्लाजरिज्म सॉर्ट ऑफ थिंग. तो हमें क्या करना है, वी शुड गिव द प्रॉपर एट्रीब्यूशन. हमने जिस भी वर्क को यूज किया, हमने इंटरनेट के एक छोटे से छोटे साइट से यूज किया हो या बड़े से बड़े, वी शुड गिव प्रॉपर एट्रीब्यूशन. देयर शुड बी डुप्लीकेट, देयर शुड नॉट बी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. एंड इफ वी आर यूजिंग द सेकेंडरी सोर्सेज, जनरली क्या होता है, हम लोग जब सेकेंडरी सोर्स यूज करते हैं, हमने प्राइमरी सोर्सेस को साइट नहीं करना है, हमने वो सेकेंडरी सोर्स को भी साइट करना है. तो प्रॉपर एट्रीब्यूशन देने के बाद we will be doing a proper research. I'm just not reading all this because it will be too lengthy. You can have a look to this. Now I will properly concentrate on the research tool only. So now how we can do that? So we should know, we should have a proper know-how about the various tools. What are the various tools? अगर हमें प्लेजरिज्म अवॉइड करना है, तो वी शुड नो अबाउट द साइटेशन मैनेजमेंट टूल्स और द रेफरेंस मैनेजमेंट टूल. हमने कुछ भी रेफर किया है तो वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम होनी चाहिए जहां वो सेव हो जाएगा और हम उसको प्रॉपरली यूज कर पाएंगे. जनरली ऐसा होता है कि व्हेन वी आर यूजिंग दीज टूल्स, वी आर अवॉइडिंग सो मेनी ट्रबल एट द एंड ऑफ आवर सबमिशन. जब हम ये रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन, हम जो ये दिक्कत आने वाली है कि हमने पहले प्रॉपर्ली देखा नहीं. इवन इफ आई एम टेकिंग अ सिंगल सेंटेंसेस, इट शुड बी प्रॉपर्ली गिवन साइटेशन. सो यूज अ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड ऑल्सो लिंक टू द करेक्टली साइटेड रेफरेंस वर्क. हमने प्रॉपर स्टाइल जो होता है कि अलग अलग तरीके से हमने जो सोर्स यूज किया है उसको मेंशन करने के तरीके होते हैं. दैट शुड बी प्रॉपर्ली यूज, लाइक द एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल, देयर आर एन नंबर ऑफ स्टाइल. सो दोस शुड बी यूज. एंड हमें ऐसे टूल्स यूज करना है जो ऑटोमेटिकली हमारी बिब्लियोग्राफी बिल्डअप करे. हमको फुटनोट डालने हैं तो फुटनोट में मदद करे या फिर हमारे रेफरेंस सेक्शन को डेवलप करे. तो ये सारे टूल्स हमें जानने जरूरी है और हमें इन्हें यूज करना चाहिए हमारे रेगुलर बेसिस पे. सो एक रिसर्चर शुड यूज दीज टूल्स. So these are the reference management tools or the citation management tools. So what are the tools which we should really use? So the tools which we should use are these are the popular reference management tools which we can use. Zotero, I think this August Gathering has already so many learned professionals here. They might be knowing these tools, but this is for the students as well. So Zotero, MyWeb, F1000, Mendeley, EndNote, all these tools should be readily used by all the researchers as well. RefWorks, WikiNDX, all these tools, if used in a proper manner, ये हमारा बहुत सारा headache research publication के समय को avoid कर देता है. So all these tools can be readily used. Then we should also, when we talk about the research tools, dear students, हमें हमारे गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स पता होने चाहिए. जैसे कि ये मैंने लिस्ट किए हैं, तो हमें इनका भी इस्तेमाल करना है. स्टूडेंट्स, now since I have clubbed these together, open educational resources as well as the research tools for the research tools.
So these open educational resources, which are the initiative of the government, also are very essential. We have National Digital Library of India, NPTEL, NCERT, PG Pathshala, शोध सिंधु, इसमें से आपके इस सर्टिफिकेट कोर्स में काफी कुछ डिस्कस हुए हैं. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी प्रॉपर्ली यूज. शोध गंगा, शोध गंगोत्री. इन माय coming futures coming slides, I have shared the screenshots of all these. CEC, SWAM is a very important portal. आपको इसमें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. So because SWAM also come under the open educational resources, which are freely available to the students. So how far we are making use of it, that is the need of the hour. And this, by this type of programs like the this certificate course, we are going to explore. Students should know about this, because the main motto should be that the students should make use of all these resources. So these are the government initiatives which are available. अब कुछ open access initiative जो they are for all. So Google Scholar, then we have academia.edu, DOAJ, Directory of Open Access Journals. This is a open access resource or the open educational resources. इसमें आपको बहुत सारी journals, उनके पूरे papers आपको download, you can do it. So, and all the quality journals which follow the open access policy, so they are included under it. Then there is a DOAB, which is Directory of Open Access Books. Then we have LibriVox, then Open Knowledge Resource, OKR, this is also there. Then we have Open Access Thesis and Dissertations. We have also repository. Dear students and dear friends, ये जो Directory of Open Access Repositories is also, if it has been found that it is not explored to that extent, that then the content it is having with it. So if these Directory of Open Access Repository, now what is the repository? It is a collection of documents, e-documents, e-resources based on the subject, or it can be based on a particular field, or it can be of a group of organizations. So all these open DOR are readily available and they can also be used. Then ResearchGate, Microsoft Academic is also now catching up very fast. Then we have Science Open and also the base. Now what are these? I will show you through the screenshots which are taken in my coming slides. Now, as I said, that a great tool for all researcher, Directory of Open Access Journal. All of you might be knowing, many of you might be knowing, but the students, if you explore this, you will find a mine of quality content through this resource. Then where should I publish? Then I've just taken that Springer. I have a question, where should I publish? Then there are certain facility given by the quality publisher that you can select the right journal for your manuscript. आपको बस आपके key terms डालने हैं, आपका topic डालना है. अगर आपने कोई research paper लिखा है, you will able to find the right paper, journal for your manuscript. Then Eden's journal selector is one of them. It is very good journal selector. It helps you a lot. अगर आपने आपकी कीवर्ड डाले, इससे आप जर्नल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, and you can also find which are the journals which are suitable to publish your research publication. So this is also one of them. Then अब ये हो गया कि अब आपने journals select भी किए, लेकिन अब आपको publish करना है, तो आपकी एक strategy होनी चाहिए. Because I told you that the first one is the selecting the right topic and then doing the review of literature, then writing down के लिए tools हमने देखे. अब हमको publish करना है, तो publishing strategy भी हमारी होनी चाहिए. We should select the most influential journal, or we should use the impact factor. 5 साल का जो impact, अगर 3 साल का, अगर actual में क्या होता है, sciences में 3 years impact factor is more than sufficient. लेकिन अगर सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज की बात करें तो उनका जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है काफी कम होता है एज कंपेयर टू द साइंस जर्नल्स.
तो अगर हमें इम्पैक्ट फैक्टर के बेसिस पे करना है तो वी कैन गो फॉर द 5-year इम्पैक्ट फैक्टर काउंट ऑफ एनी जर्नल विच आर बिलोंगिंग टू द सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज। तो इस तरीके से हम जर्नल सिलेक्ट करेंगे। एक और आप पैरामीटर यूज कर सकते हैं विच इज द इमीडिएसी इंडेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इमीडिएसी इंडेक्स को एक जर्नल के इमीडिएसी इंडेक्स को आपने फाइंड किया तो आपको पता चल जाएगा कि कितना स्पैन लगेगा। बिकॉज इवन आई हैड अ बिटर एक्सपीरियंस कि आई पब्लिश वन जर्नल पेपर, आई सेंड माय पेपर टू अ जर्नल or but it took so much of time, and after 8 months I got that paper back saying that it does not fit into the scope of the journal. So this is very wrong. After 8 months they are saying that we are not publishing it because it is not fitting into the scope of the journal. तो अगर हमें डिसाइड करना है तो हम इमीडिएसी इंडेक्स देखना जरूरी है। हमको पता चल जाएगा कि ये जर्नल कितना टाइम लेता है एक पेपर के बारे में आपको जानकारी देने के लिए कि वो पब्लिश होगा कि नहीं। So this is very important. And finally, the most important thing is you should keep yourself active in the journal contribution. अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हो तो आपकी मेजर क्वालिटी है कि you are an active contributor to the research through your research publications. So that is very essential. Now, next is the last one is how you can promote your publication. आप अपने पब्लिकेशन को प्रमोट कैसे करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने पेपर लिखा पता किसी को नहीं चला, so I will, my research will not be getting any visibility. Nobody might be knowing that Manju Dubey is doing research on so and so topic. So that visibility, promoting your publication is very important. So how you are going to do that? Tips for smart quality publishing. There are few tips which you should follow for your quality publishing. What are those? The first one is you should improve access and retrieval of your research study. Is the surest way. You should, आपका जो key term है, आपका impact कब आएगा? मैंने आपको बताया, आपका जब पेपर रिट्रीव होगा किसी सर्च इंजन या किसी रिसर्च टूल में जब डाला जाएगा तो it will retrieve. So for example, my work is on digital copyright. If I put digital copyright, my work should be reflected. We should improve the access to our publication. वो improve और retrieval rate उसका बढ़ना चाहिए। वो कैसे होगा? It will be through proper keeping a track of your research and putting the proper keywords, as I already told you, and properly disseminating your research. So how it can be done? We have to use certain tools then. So what are the tools which we can use is a question. So, but before that, you should know these things. If my research need publicity, it should be known to others. We should use few things. These are the tricks. First, your same name should be go for all the publication consistently. अगर मेरा research tools मेरा नाम कहीं पे मंजू दुबे है, कहीं पे MN दुबे और कहीं पे मंजू एन दुबे, then it is going to create a confusion. So it should be uniform in all my publication or in all my manuscript. We should use a standardized institutional affiliation. There should be optimized. We should optimize. मतलब we should maximize the effect of our keyword or the title and abstract. It is very essential. क्योंकि कई आप जब retrieve करते हो किसी भी अपने रिसर्च आर्टिकल को भी, आपको एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल रहता है और वो पेड रहता है वो पेपर। सो फॉर दैट एटलीस्ट आपको विजिबिलिटी मिलेगी जब आपका एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल परफेक्ट रहेगा। So all these and you should use more and more references, and your title should be very specific and simple. If you use these tips, definitely your publication is going to make news. So tools. So open publishing platform is one of the better way, and you should use open publishing tools. क्योंकि आज का जमाना आपके काम को means कुछ लॉक में रखने के लिए नहीं है. It should be made open to the public. The more your paper is read, the more your research is going to make an impact. So your working paper, आपके पेपर जब freely available रहेंगे, so automatically
आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी. So it should be put it either in the working papers or your preprint or postprint. मैंने पहले there are certain conditions, we should not talk about all those because it will be like going into details, but if you are putting your paper in the open access journals, yeah, open access repository like SSRN or archive, then these are really going to make your research more visible and more readable by the public. So this is very essential. So I have taken a screenshot of archive.org. If you put in your paper, it get more visibility, mind well, but it's like, it should be quality research as well, but that can be archived. Your work can be archived. Publish in an open access journal, as I've discussed. So there are so many open access repository available. These open access repository can be used. You should publish in a journal with a high impact factor. You should do a collaborative research. Dear friends, आजकल collaborative research जब आप करते हो, team work करते हो, तो उसको citation ज़्यादा मिलता है, उसको लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि it is like a brainstorming on a particular topic. So that should be encouraged. There should be a tutorial sort of paper. It should, or a paper should be such that it organize certain idea in a particular field. So agar aisa raha, so you get a wider audience, and if you get a wider audience, you are going to make your research more impactful to all. So certain knowledge based tools, open educational resources, dear friends, like these are for students. Now I am just going to show you various open educational resources which should be known by all the students, and they are known by many of us, but just for this session I wanted to put it in front of you all. So these are the knowledge based tools which all of you should know and use. That is online encyclopedia, dear students, then online library and national digital library पे ये इस workshop में हो ही गया है एक session. Then we should know about the online repository, subject repository. We should know about various subject gateway. We should also know about the various audiobook platforms. जैसे Audible is a very good platform. So Audible is a very good platform. Then we should also know about directory of open access book, already told, directory of open access journal, directory of open access repository, and dear student, TED Talks, very, very excellent too, dear students. All the talks are very relevant and you can find the talk of your interest, and it is purely academic tool which can be readily used. Then tools for research. अभी मैंने जो इतना आपको सब डिस्कशन किया, आपने देखा होगा कि जब टूल्स ऑफ रिसर्च को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर सकते हैं. प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ रिसर्च, जब हम रिसर्च की शुरुआत कर रहे हैं, हम जब डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस पर वर्क कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, और फाइनली हमारा डेटा एनालाइज होने के बाद जब हम उसको राइटिंग वर्क कर रहे हैं, तो ये 3 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइडेड है हमारा रिसर्च का टूल्स. सो पहले अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या लगेगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लगेगा, तो हमें शोधगंगा वी कैन यूज मेंडले फॉर द रेफरेंस मैनेजमेंट. मेंडले कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर लिटरेचर सर्च, डियर फ्रेंड्स. देन गूगल स्कॉलर, एक्सीलेंट टूल. देन वी हैव सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क, SSRN, वी हैव जेस्टर. तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं. Then we have to also do content search. So internet is the best source, but there are few search engines. In coming slide, I will show you that one particular search engine that can be an excellent tool. We should also know about the databases and endless database. Maximum colleges में endless database का, but there is a burning issue कि endless database को students use नहीं करते हैं because they feel कि it is more for research. But I feel that when I discussed this with my students, I found that they were so amazed that it has so many good quality books. So if we have serious learners amongst us, I think endless can be a great source for all the students. Then literature browsing tools and data collection, जैसे उसके लिए Mendeley, Zotero, spreadsheets, these are the tools which we generally use. Then tools for data analysis. I will not go into depth of this because there are so many tools. Maximum here R free is there, R Studio.
is one of the tool which is used for software, but it is little bit of more of technical thing. So I will just skip this. And finally, we should use this. I want to um, uh, take your attention to this particular tool, which is tools in post data analysis. So it is the reference and the bibliography compilation tool. हमने अभी देखा Zotero, Mendeley, all these tools, even Microsoft में भी हम referencing कर सकते हैं. तो ये एक टूल हमें पता होना हमारे पोस्ट डेटा एनालिसिस के समय. हमें ग्रामर चेक के लिए ग्रामरली can be used. There are so many tools. Grammarly is paid one. After there is a free trial version, then it is a paid one. But there are other tools also. In coming slide, the free tools I have discussed. Then we should also know about the thesis or article discussion platform. हम जब ये academic discussion करते हैं तो कोई forum होना चाहिए हमारे लिए जहां हम हमारे like-minded लोगों से discuss कर सके. So academia.edu and ResearchGate is such a platform, dear students, जहां आप आपके research के बारे में बता सकते हो, आपके research projects, आपने कुछ project start किया होगा, you can discuss and you get input from across the globe. Then we should know about the plagiarism detection software. There are commercial software as well as, but free are also there, like the article checker, dupli checker, and Turnitin is a paid one, and the Viper is a free one. So all these you should know. और आपको आपका finally आपने कुछ research लिखा है तो आपका कहाँ submit करना है? तो आप you will submit it. So there is a journal submit. Manuscript submitting platform there given by various quality publisher which can be done. Now there are certain research oriented tool. I have just put it in a slide. I will go fast from here. Research oriented tools, search engine, Google, Yahoo, Bing, these are there. Then for the research paper, you can search Google Scholar, Microsoft Academic, and SSRN. Then if you want to share the data set, so you want to get the data set. What is data set? बहुत सारे एक ही single focus oriented data when it is collected. For example, government.in. So here you will get all the government reports. Then GitHub is also a data set from where you can get the requisite data or subject wise. Then there is you can communicate with the expert. तो उसके लिए क्या किन से आप communicate करेंगे? These are the also tools which can be used, like the ResearchGate, Academia already mentioned. Then Open Science Framework. This is also excellent one, but it is little bit of mostly those who are the ace researcher, they make use of it, or the science. इसमें science word mention किया है, लेकिन it is open for all. So it is also a very good tool where you can even go for crowdfunding, crowdsourcing sort of thing for your research. Then Vidwan database is one of the things from where you can get a idea about the various expert. IRINS, this is a InfluVNet initiative, जिसमें अभी जो सारे research publication है different big organization के, उसका एक database create किया जा रहा है. So this is also an excellent tool to know about the quality research going on in India. Then free digital library, आपको पता है, Internet Archive, NROER, NDLI, these are the things. Then अगर आपको collaborative writing करना है, तो Science Open, TypeWrite, Draft, आप अपना टाइप करके किसी के साथ शेयर कर सकते हो. आपको ग्रामर चेकिंग करना है या कुछ और, so that can be done with this particular tool. Then research profiling, आपका अपना research profile होना चाहिए, जैसे Google Scholar में आपका research profile होता है और भी जगह पे. So you should have a research profile. So ORCID, Researcher ID, Google Scholar, and then Open Science funding. It is ये funding के लिए भी use होता है, आपको open discussion के लिए भी use होता है. साथ में you can also put in your research project, जिससे आपको अगर कहीं से crowdsourcing करना है, so that can also be done through this particular Open Science funding. Social media tools, आजकल सिर्फ social media tools not only for like
it is not only for entertainment or sort of non-academic purpose. It is now also used. आप लोगों को पता होगा, अगर आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से कोई आपने कुछ रिसोर्स को डाउनलोड किया, अगर आपको उसको ट्वीट करना है, so you can also tweet that. You can also put it, you can share it on different platforms. So this is the beauty that now these social media tools are also rapidly used for the academic purpose. ResearchGate and academia I have already discussed. Then I have already talked about these government initiatives. You should also know about these tools. Virtual lab students, you should know about InfoCode. This is also one of the important tools. Talk to a teacher and FOSSEE, free and open source software, that is freely available software. They are discussed, and IIT Spoken Tutorial is also a platform which provide various initiatives through which you can get information about the various free softwares. Now I have just jot down or included all these resources, so you can have a look. Archive.org. It is open access to 1 million academic article in different subjects like physics, maths, computer science, biology, statistics, physics. Open science directory, dear friends, ये पूरे journal को index कर दिया है जो DOAJ और बाकी में available है. Then there is a social science research network. इसमें करीबन आपको 7 लाख से ऊपर पेपर मिलेंगे in 30 disciplines. Then अगर आपको biological या life sciences के material चाहिए, so it is available in archive. Then research paper in economics. So I have just penned down few. I already told you इतने सारे resources हैं, लेकिन these are the few resources which are very reliable, which are used more rapidly by the people. Then few subject repository like directory of open access books. Then Oyster is also one of the resource. Core, this is very good resource, dear friends. Core, it provides searchable access to millions of research papers from repository and open access journal, and even useful for locating the thesis and dissertation, dear friends. मैंने आपके सामने एक बात की थी कि there should be some search engine. Google के अलावा कोई search engine जो बहुत useful होना चाहिए students के लिए. So that is JURL. It is a unique search engine dedicated to indexing free and open access journal and thesis in arts and humanities, biomedical sciences, and so many subjects. So this is one of the search engine. Then global institutional repository, they can be used like the Digital Common Network, directory of Open DOAR, Figshare. This is also a very useful online repository. इस repository में आपको different figures, data set, image का collection मिलेगा एक ही जगह पे. So Figshare is also very good tool, research tool. Now I am taking the presentation little faster. Now Open Access Library, OALIB. ये एक search engine है जो based on a database जिसमें open access papers को आपको available करा के दिया गया है. So this is also available. 322 disciplinary repositories available hai. Then there is BASE, that is Bfield Academic Search Engine. So Bfield, it is one of the world most voluminous search engine, dear friends. अगर आप इसमें search करते हो, आपका academic purpose purely solve होगा because it has around 150 million documents and it is covering around 7,000 sources. So it is a very good open access source. Then NDLTD, National Network Digital Library of Thesis and Dissertation. अगर आप PhD कर रहे हैं, this is a very important source. NDLTD. It is completely dedicated for your thesis and dissertation. Then मैंने थोड़ा सा students के लिए categorize करने के लिए resources को categorize किया है, open educational resources को. अगर मुझे complete course चाहिए किसी university का, किसी college का, या मुझे किसी particular topic lectures और videos चाहिए, then I can refer these sources, dear friends. One is the Academic Earth, then one is Bridge to Success, Coursera, EDX, Learning Space from Open University. OERU is also a very important source. So for multimedia,
multimedia. If you want videos, audios, and all these sources, then these are the source for the students, dear friends. TED Talks, Khan Academy, Wikimedia Commons, and National Digital Library of India. If you want image and artwork चाहिए आपको exclusively, then Creative Commons Search एक tool है, then Smithsonian Open Access and और Unsplash, ये सारा जो images और artwork आपको available मिल जाएगा. Then open access books अगर आपको चाहिए, so these are the sources. OpenStax College, then there is Open Textbook Library, Wikibooks, Project Gutenberg, and Google Books. यहाँ पे आपको freely available books available हैं. So this is an excellent tool for you, dear students. Then alternative to Google. We have talked earlier about JURN. Another alternative is Cyrus. It is a search engine through which you can search only for scientific information, academic information. So this through you can search. So instead of using Google for the researcher, they can use Cyrus. Then open access journal, I have already discussed. Then we have open access book. Directory of open access book is the excellent one. So that can be used. Then I have discussed about open access library, directory of open DOAR. This is also available for you all. Shodhganga, it is about all the ETD of India in Indian National ETD repository. Then we can also go for Journal of Indian Academy of Sciences. So here you will find all the articles which are published by the Indian Academy of Sciences. So then National Digital Library of India, ये सारे Indian initiatives हैं जो आपको बहुत useful है. Then ERIC database, it is very good database and it is offered to the public by the Institute of Education Science at the US, and it is also a very good source which can be readily used. Then we have Science Open. Science Open एक interactive platform provide करता है. इसमें आप अपनी प्रमोशन भी कर सकते हैं अपने रिसर्च की, और पब्लिशर्स के लिए भी ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है. सो यू कैन डिस्कस अबाउट एनी लेटेस्ट रिसर्च which are done at your end. Then CORE, I already discussed. It is the service provided by the Knowledge Media Institute, and it is provide free unrestricted access to research for all. Then we have SSRN, which is Social Science Research Network. It is also a very good tool. Then PLOS, अगर आपको मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड आर्टिकल्स चाहिए, आप कुछ मेडिकल साइंसेज फील्ड में करना चाहते हो मेडिसिन में, सो दिस इज एक्सीलेंट टूल. बेस, I already told you, it is a B-Field academic search engine. You will get purely the academic one. Then we have Digital Library of the Common Repository. यहाँ पे आपको international literature on the commons means free and open access full text article, paper, dissertation सब आपको available है. Then the World Fact Book, Central Intelligence Agency CIA का World Fact Book. It is a reference resource जिसमें आपको किसी भी country के बारे में different details information मिल सकती है students. Then Paperity, it is a multidisciplinary aggregator जहाँ पे आपको open access journals जो available करा के देता है. Paperity is also one of that. Then कंप्यूटर साइंस की अगर आपको बुक्स के बारे में ओपन बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में, then it is one of the source which can be readily used, which is DPLB. So this is one which can be used. Then if you want to find certain literature on economic, then it is an academic search portal, Econbiz, which can be used. Then if you want Biomed Central is one of the tools जिसमें आपको biomedical sciences से सारी information मिल जाएगी. If you want to search, then JURN, I already told you, it is a search tool which help you to find free academic article and books. Okay, and it started in 2009 and it is also a very excellent tool. And DIRED, it is a digital repository which is जिसमें आपको चुने हुए sources आपको available करा के दिए as per your subject, and different data sets have been prepared under it. Then PubMed, already discussed with you.
Then Zenido, it is also a very good platform, but it is for the general purpose. So it is an open access repository and it can be used to collect as well as share your research to with the others. So it is digital artifacts can be shared. Then re3data.org, it is also a research data repository and it can be used as a tool to share your research and it also to retrieve the data about the different academic discipline researches. Then Data Hub, it is a repository of open and free data sets. It contains high quality data and data sets. Then Andy LTD already discussed. Then DART is one of them. इसमें यूरोप के सारे e-thesis portal available है. Then Ethos is a e-thesis online service. Since we talk about research, we should also know about all these things. So this is Project Gutenberg. सारी books जो आप इसमें digitized form में available करा के दिया है. It was founded in 1971 and since then it is having the full text of public domain books. Then Rare Books Hub. अगर आपको कुछ rare books चाहिए हैं तो rarebook.hub.com. Through that you can, आपको जो पुरानी books है जो आप available नहीं है वो आपको इससे मिल जाएंगी. अगर आपको agricultural related data चाहिए so you can go for Agricola. Then MOOCs, which is the full form is Massive Open Online Courses. If you want to get information about the various courses in your discipline or you want to improve your profile, you have to do different courses. And nowadays it's very essential. So these are the platform: Coursera, Udemy, EDX. Then in India it is SWAM. So all these platforms are available and you can access. Mendeley already discussed. It provides you 2 GB of space for saving your document as well, and it is very excellent. आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो वो आपको अलर्ट्स देता रहता है और आपका रेफरेंस मैनेजमेंट टूल भी है ये और आपका लिटरेचर सर्च टूल भी है. Then EndNote, it is also for the reference manager tool. And finally, dear friends, after so much of comprehensive coverage of this OER, I just want to say that there are abundant millions of research tools. They aim to retrieve scholarly literature. It is important, but for all of us, that we should check the resource tools, their relevancy. We should use proper technique or the strategy. There are innumerable strategies like using the proper keyword, Boolean operator, and we should have a hands-on and real-time application. मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब तक आप उसको use नहीं करोगे, it is of no use for anybody. And finally, we should use the right tool at the right time, and it will help us to do the research with more credibility and viability. So few additional tools like Quizy के लिए and then digital notebook, I have included few of them. If you want, mind mapping tools are also there, like the Free Mind. It is one of the tools which can be used. These are the references from there. I have taken the material. Most of the screenshot I have taken from the internet resources. Thank you so much. I just want to tell you, dear friends, that tools and technology can become the wings. They can make us to fly and do more. They will allow us to fly farther and faster. But the main thing is, it is with us if we allow these things to be done at our end. So I request you all that there are so many of tools available, but you should make use of them. And if you make use of it, you are going to do wonders in your academic field. Thank you so much. Over to you, Aparna ma'am. I thank you, the organizer, for giving me this opportunity to share my views about this open educational resources and the open tool. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Is there any questions from participants? Are there any questions? Yes, Gabne sir, please. हेलो. Hello, sir. बोलिए. Good afternoon. नमस्ते. Good afternoon, sir. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा आपका. थैंक यू सर. लेकिन आप क्वेश्चन पूछने वाले हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ. बोलिए. ठीक है, क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन क्या कर सकते हैं अभी.
मेरा ऐसा एक व्यू है कि ये ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, हाँ जी सर। तो बहुत सारे बच्चे कैसे हैं कि जो अर्बन एरियाज में रहते हैं राइट सर। बहुत सारे एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि रूरल में वही प्रॉब्लम है। अभी सर लॉकडाउन में क्या हुआ जी कि लॉकडाउन में हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ये सुविधा नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ नेट इशू। जी सर। और कॉलेज में तो आ नहीं सके हो। अभी क्लासेस भी चालू है तो बहुत सारे बच्चे में 60 बच्चों में से 2 या 3 बच्चे या 10 या 12 बच्चे ज्वाइन होते हैं। जी सर। तो ये ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है अच्छा कंसेप्ट, बट उसमें ऐसा कुछ प्रावधान है कि ऑफलाइन में भी हम लोग उसको एक्सेस कर सके, कुछ ऐसा कुछ है क्या? सर कुछ कुछ टूल्स में है, लेकिन ज्यादातर जैसे मैक्सिमम जैसे मैंने जैसे बताया आपको अलग अलग स्टेजेस में आपको यूज करना है। तो जैसे मेंडले हो गया, अब वो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है, तो उसका ऑफलाइन मोड पे भी हम वी कैन वर्क विद इट। और लेकिन अल्टीमेटली जब आपका डेटा आप जैसे मैं कुछ सर्च कर रही हूँ या मैंने कुछ सर्चिंग करने के बाद मैंने उसको सेव किया, तो वो जब तक सिंक नहीं होगा, जब तक वो क्लाउड पे नहीं आएगा, ऑनलाइन नहीं होगा ना, वो अपडेट नहीं होता सर। वो एक प्रॉब्लम आती है। लेकिन कुछ जैसे रिसर्च टूल्स जैसे आप ऑनलाइन बोल रहे हैं, ऑनलाइन इज द ऑप्शन। और अदरवाइज हम लाइब्रेरियंस एक काम कर सकते हैं कि हम एक रिपोजिटरी बनाएं जिसमें हम ये सारी चीजों को रिसर्च टूल्स करके हम उनके लिए प्रोवाइड करके दें। तो ये एक हो सकता है, हम उनको लिंक्स दे दें जब उनके पास अवेलेबल हो। और दैट इज द नीड ऑफ द आवर कि वी शुड डू द डेटा क्यूरेशन वर्क। तो ये दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन, बट नहीं। मोस्टली वी आर स्टक विथ ऑनलाइन वन। यस सर। हाँ, प्रॉब्लम क्या है मैडम अपने इसमें कि सारा बहुत कुछ है, जी सर। लेकिन ये लॉकडाउन में समझ में आया कि रिमोट एरियाज में जाने के लिए कितना ट्रबल होता है, कितना बच्चों को तकलीफ हो रही है। जी सर। बच्चे ज्वाइन ही नहीं होते, ज्वाइन हो गए लिंक नहीं मिली एग्जामिनेशन में। अभी नागपुर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में कितनी बार एग्जाम लेनी राइट पड़ी सर, नागपुर यूनिवर्सिटी देखा। में, है ना? तो ये जो अनुभव है इससे ऐसा लगता है कि जी पहले तो हम लोग तो नेट का इशू पहले सॉल्व करना चाहिए कि एवरी रिमोट एरियाज में नेट का जो है वो फुल पावर में रहना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे जी एजुकेशन टूल्स जो देना है तो उसमें ऐसा है कि कुछ ऑफलाइन का भी जी सर। प्रावधान होना चाहिए कि बच्चे यहाँ से नहीं तो यहाँ से कुछ कर सके, कि जिनको जो भी कुछ मिलना है वो मिले। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि अ, हमने तो टीचर ये बच्चों के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा एजुकेशनल, बट हाउ मेनी टीचर्स दे यूज दिस ऑनलाइन टूल्स, ऑनलाइन रिसर्च टूल्स, ऑनलाइन रिसर्च, ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल ऐसा कुछ? Gavne sir, I always appreciate you for having so many revolutionary ideas. I know you are full of ideas, but the thing is, sir, इस तरीके से यानी हम बोलेंगे कि वो कितना यूज कर रहे हैं ना, ये यानी इस ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलने के बदले we need to discuss and we need to strategize. We need to strategize नहीं and नहीं मैडम, मैडम ऑफ द साइड में ये बोलूंगा कि हम लोग इस ऐसे चीजें प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलते हैं ना, इसलिए वैसी चीजें वैसी ही रहती है, कोई बोलता नहीं है और वही रहता है। मतलब नहीं। अभी देखिए ना कि हम लोग लाइब्रेरी में काम करते हैं, हाँ, जी सारे सर। हम एक ही जाति के लोग हैं। हाउ मेनी टीचर्स दे कम रेगुलरली टू द लाइब्रेरी? हाउ मेनी टीचर्स दे टोल्ड द स्टूडेंट्स हाउ टू यूज द लाइब्रेरी, सिंपली लाइब्रेरी? ये तो सर आप मुझे एक सब बात बताइए, नाउ द क्लासरूम्स आर गोइंग टू द स्टूडेंट्स, सो द लाइब्रेरी शुड आल्सो गो टू द स्टूडेंट्स और द यूजर्स। तो कहीं ना कहीं इट विल बी अ कोलैबोरेटिव वर्क, जहां हम उनको समझे, वो हमको समझे। ये बात सही है कि आते नहीं है और थोड़ा सा फुटफॉल्स, लेकिन ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी नंबर ऑफ फुटफॉल्स कम हुए हैं। नहीं, मेरा अनुभव ऐसा है मैडम कि हमारे यहाँ बच्चे बहुत आते हैं लाइब्रेरी में, ओह दैट इज गुड। फैकल्टी नहीं आती। ओके। दैट इज अप्रिशिएबल। हाँ, Congratulations. I बच्चों am को तो feeling good. हम लोग स्टूडेंट्स को संभाल नहीं सकते, इतने बच्चे काउंटर पे आते हैं सर बट लेकिन एक चीज मैंने देखा, जैसे एनालिस्ट के समय मैंने मेरा खुद का अनुभव शेयर करूंगी। जब मैंने बच्चों को दिया, मैंने जबरदस्ती कंपलसरी आप पकड़ पकड़ के बच्चों को चलो एनालिस्ट का लो,
कुछ बच्चे जो बहुत ही पढ़ाकू थे ना, दे फेल्ट वाओ मैडम ये आपने पहले क्यों नहीं बताया. So it was also a good experience कि it happened. But हाँ टीचर्स के एंड से उतना रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन कुछ कुछ टीचर्स यूज करते हैं. कुछ कुछ टीचर्स को मेरे ख्याल से अभी उसकी ना इम्पोर्टेंस अभी भी नहीं समझ में आई है कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं. जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल है सर की पब्लिश करना है पेपर, तो indianjournal.com में जाके हम अगर वो indianjournal.com में हम देखेंगे तो हमको पता चलता है कि वो यूजीसी केयर लिस्ट में है कि नहीं है, और बाकी चीजें पता चलती है. और इससे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो कि हमें कौन सी जर्नल में पब्लिश करना है. तो हम उनको उनके फायदे की बात अगर हम बता पाए तो शायद मुझे लगता है कि वो ज्यादा यूज करेंगे, मे बी. है ना, दैट आई कैन होप ओनली. हाँ, दूसरी बात ऐसी है कि ऐसा होता है कि जैसे इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी लोग अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं, है ना. हाँ जी. लेकिन ऐसा है कि हमारा विषय तो है नहीं कॉलेज में, हमारा लाइब्रेरी साइंस का कोई कॉलेज नहीं है. आपके यहाँ होगा भी, लेकिन बहुत से कॉलेज में कहाँ लाइब्रेरी साइंस का विषय है. तो ये तो है ना, मतलब आर्ट कॉमर्स के सारे विषय पढ़ाते हैं. उसमें ऐसा है, ये ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि लोग 40-45, कई कुछ लोग तो ऐसे है कि 100 के ऊपर उनके रिसर्च पेपर हो गए. लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि आप रिसर्च पेपर जाके कहीं पब्लिश करके आते हो, दैट पब्लिश पेपर शुड बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द लाइब्रेरी और नोटिस बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. ये प्रैक्टिस जब तक रहेंगे नहीं तब तक सर हैव बच्चों यू में स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस एट योर कॉलेज इंस्टीट्यूशन? नहीं, वो तो आते ही नहीं ना, देते ही नहीं. सर इसमें भी मिक्स बैग ऑफ फैकल्टीज है. मैंने कुछ फैकल्टीज से देखा तो वो बहुत रेडीली मुझे कोऑपरेट किए, कुछ लोगों ने नहीं किए. तो ये तो समस्या कॉमन रहेगी सर. लेकिन आने वाले समय पे जैसे उनको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा ना, रियलाइज होगा ना, मुझे लगता है ये अपनी प्रॉब्लम अपने आप नलिफाई हो जाएगी सर. गपने सर कैन यू कैमरा आपका ऑन कीजिए ना. हाँ हाँ. So that we can take a screenshot of such a learned librarian, sir. Thank you, sir. Thank you. चलो, बहुत बढ़िया रहा मैडम. चलो, Any more questions, Thank अपने you. sir? Because questions से नहीं, ज्यादा मैं और Thank you, अप्रिशिएट thank you. करना चाहता हूँ, अपर्णा मैडम को अप्रिशिएट करना Thank चाहती you, thank you, sir. बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च किया मैडम ने. Thank you, बहुत sir. बढ़िया. ओके, Thank you. Okay, shall I conclude? Yes. Okay. First of all, I would like to thank our resource person, Dr. Manju Dubey ma'am. Thank you, madam. Very nicely told about open access educational resources and research tools, like how to search tools, their terminologies, academic search engines, and quality research tools, and update our alert systems and tools and avoid plagiarism, open access initiatives, and how to promote our publications and alternatives from Google and various repositories. Wonderful presentation, madam. Thank you. On behalf of all the organizers, I express my sincere gratitude to you, ma'am, for accepting our invitation and joining us and sharing your knowledge with us. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Now I'll leave the meeting.
क्या बोलना है?